Good evening, Survi. Good evening, Dhruv. Now, come on. I hope now I am visible. Fine. So today we are proceeding with the topic issue of debentures. I am waiting for some more students. Okay. I want the participation from you all, right? You have to answer the questions. If you don't know the answers, no problem. You just say, sir, please आप बता दीजिए. Please you tell us what to do. No problem. But I want the hint that are you answering or not? Right? Are you there or not? So we are talking about debentures. Debentures means the acknowledgement of debt. Acknowledgement of debt. That is why this debenture is called a written instrument. Debenture is called a written instrument which acknowledges the debt. Companies अपना पैसा बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से ले सकते हैं, लेकिन there are lots of formalities they need to fulfill. बहुत सारी formalities. गुड इवनिंग रिया. बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती हैं और इन सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बहुत टाइम लग जाता है. तो कंपनीज को उन असेट्स को भी गिरवी रखना पड़ता है बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, राइट? और उसके बदले में उन्हें फंड्स रेज कर दिए जाते हैं, फंड्स उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है. अब द थिंग इज, कंपनी चाहती है कि मैं अपनी असेट्स को गिरवी ना रखूं, वो मेरे पास ही रहें, मुझे फंड्स भी मिल जाएं, और मुझे जैसे बैंक को इंटरेस्ट देना था वैसे ही हम इंटरेस्ट भी दे लेते हैं, राइट? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो खुद फॉलो कर रही है. आप मुझे कितना दोगे, हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे, एवरीथिंग. एंड डिबेंचर भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है. डिबेंचर कंपनी इशू करती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, हु आर फ्रॉम द पब्लिक ओनली. पब्लिक से कोई भी डिबेंचर्स को खरीद सकता है, बट द थिंग इज, वो फर्म भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, एटसेट्रा. वो डिबेंचर्स को क्यों खरीदेंगे? क्योंकि कंपनी उनको ऑफर दे रही है,
You pay us rupees 100, we will give you 6% interest. You pay us 100, we will pay you 8% interest every year. That is why डिबेंचर के आगे उसकी परसेंटेज क्लियरली मेंशन की जाती है. I generally say X% debentures. This X% may vary from company to company. Company ABC may issue debentures like 8% debentures. It means जो भी डिवेंचर की फेस वैल्यू होगी, जितने के डिवेंचर्स आपने खरीदे हैं, उसके बदले में आपको 8% पर एनम का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा. एंड इफ कंपनी XYZ issues 14% debentures, that indicates company XYZ is ready to pay 14% interest at the end of every year. Debenture interest can be paid either half yearly or yearly or at any fixed interval. Good evening, Mahi. So अब तक मैंने आप लोगों को जो बताया वो क्लियर हुआ about the debentures, how the X% debenture indicates interest. क्या आप लोगों को क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फास्ट. Good. Nice, Vani. Dhruv, good. So now the thing is, you should understand the definition of debenture. According to me, debenture is a written instrument which acknowledges the debt of a company. And believe me, it's under the common seal of company. क्या हमें पता है common seal किसे कहते हैं? What is the meaning of common seal of a company? What is common seal? कंपनी का ठप्पा, कंपनी की मोहर, उसे हम कॉमन सील ऑफ कंपनी कहते हैं. राइट? नाइस. आपको मुझे हर बार जैसे अभी रिया ने क्लियर किया, मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि यस यू अंडरस्टैंड, यू आर गेटिंग, सो दैट आई कैन प्रोसीड. दैट विल बी द मोटिवेशन फॉर मी कि यस यू आर लिसनिंग टू मी. शुड आई प्रोसीड फर्दर? Yes, only 2 replies yet. Come on. Nice. Still, some students are not answering. See, debentures contains the contract for repayment. I repeat, debentures contains the contract for repayment of 2 things. One is principal and the another one is guess what? One is principal and the another one is, we were discussing about this since long, and that is interest. Yes, Dhruv, you are right. We must understand that the debenture is the contract. No, dividend is given to the shareholders, not to debenture holders.
Debenture holders always get interest. They can never receive dividend. Dividend is a very unique word, which is a part of profit of the company given to those people who are ready to bear the risk. And those people are called shareholders. So either equity share or preference share, they get dividend. But the people who get the debentures, who are ready to invest in the company by taking a debt instrument, उन्हें डिबेंचर होल्डर्स कहा जाता है. एंड उनके बदले में, उनके रिस्क के बदले में उन्हें जो मिलता है, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट. यस, hope it's clear to all of you. Now the next thing is, I have already discussed, there are two concepts. One is principal and another one is interest. And further, I want to expand that this interest can be paid at fixed date, half yearly, quarterly, or annually, depending upon the company's norms. So there is no if or but. The company may choose its own norms. Yes, we are paying interest on 30th June and 31st December. Okay. The company may say we are paying interest at once only at the end of financial year, that is 31st March, then also okay. So this kind of concept should be very clear to you all. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? डिवेंचर. डिवेंचर के आगे उसकी जो परसेंटेज लगी होती है, X% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, Y% डिवेंचर, 14% डिवेंचर. दिस इज द वेरिएबल. X and Y इज वेरिएबल. एंड जो मैंने अमाउंट मेंशन कर दिया उसके आगे 8%, 10%, 12%, 14%, दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट डिवेंचर. We have discussed the definition of debenture, and we understood that the debenture interest can be given at the end of a particular fixed time as per the company's norms. And we have already discussed debenture के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, एक प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट. और ये दोनों बातें आपको क्लियर हैं तो डन कर दीजिए. Come on. क्योंकि अब जब आप डन कर देंगे तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. राइट. वो पॉइंट्स क्या होंगे? वो पॉइंट्स होंगे सबसे पहले जो आपने आज तक किए हैं. आप लोगों के सबके रिप्लाईज आने चाहिए डियर, क्विकली. वो पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी क्लास 11th में भी कर चुके हैं. दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. क्या आपको पता है शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या फर्क होता है? उनके बीच में फर्क बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं. वो है कि डिबेंचर किस हेडिंग के अंडर आता है और किस सब हेडिंग के अंडर आता है. क्या आपको ये बात पता है? We have already done in class 12 term 1 financial statements of a company, book 3. आपने उस book 3 में हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स पढ़ी थी. आपने पढ़ा था शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर 3 चीजें आती हैं, 3 सब हेड्स आते हैं. कौन कौन सा? शेयर होल्डर्स फंड. Number 1, share capital. Number 2, reserves and surplus. And number 3, share application money pending allotment. क्या सही बोला मैंने?
No. Share application money pending allotment is a separate heading. No. आप भूल नहीं सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने पढ़ी हैं टर्म 1 के अंदर. यू कांट फॉरगेट. आप उठा के देखिए अपनी कॉपीज. इट वॉज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. I repeat, 3 subheads under the head shareholders fund were share capital, reserves and surplus, and money received against share warrant. Please be careful. Money received against share warrant. Do you want to ask what is warrant? Or you want to reply that you know the third point is that warrant? Okay. So next was share application money pending allotment. That was the second heading. Third heading was non-current liabilities, and fourth was current liabilities in liability side. Non-current liabilities indicates those 4 subheads. याद है आपको? लड्डू दो ऑरेंज लो, लड्डू दो ऑरेंज लो. Remember? Long-term borrowings, deferred tax liabilities net, other non-current liabilities are long-term debts, and L, long-term provisions. So जो उसका पहला सब हेड है ना नॉन करंट लाइबिलिटीज का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वही आता है ये डिबेंचर्स. आई रिपीट, डिबेंचर्स when issued for a particular number of years, it comes under non-current liabilities. That is the heading, and subheading is long-term borrowings. Is it clear to all of you? Please make a note of it. And please mention here in the chat box that you understood what is the heading and what is the subheading. I am waiting. You should write here. Heading is and subheading is. Debenture comes under the head dash and subhead dash. My question. Who is Zainish? Yes, Mahi, you are right. I want everyone to answer the heading and subheading of this particular topic. Debenture comes under the head dash and subhead dash. Good. I can see 2 answers, Mahi and Vani. I can see Dhruv, and all 3 are absolutely correct. Good.
Right. Fine. Still, one student is missing. Come on. Now comes another very important point. We are doing the difference between shares and debentures. And the first point I would like to take, that is basis ownership. How will you say there is difference? Tell me. If I provide you distinguish between share and debenture on the basis of ownership. Come on, try. I wish to see your answers quickly. Say, I'll tell you how should we write. Yes, this is the way. When we talk about ownership, a shareholder is the owner of the company, and debenture holders are the loan creditors. They are the debt providers. Company is liable to them. This is something important. You're right, Ria. Shareholders are real owners, no doubt. Debentures is the borrowing of company. Yes, that acceptable. Debenture is just debt. Yes. See, I do believe that you are understanding. If you know the answer, it's fine, you write it. If you don't know the answer, please still mention something which indicates that you need to get the answer. Come on, everyone. Why I am giving you the base, you better understand. Because in examination, the questions are asked in sample question paper. I am talking about SQP, which is issued by CBSE. They are giving the basis. Can you do the differences between these two on the basis of this and this? The bases are provided to you. And now, if you have understood that the shares are the ownership title and debentures are the debt capital, then we can further proceed for the next point. And the next point is return. What can you write about this word return if it is the base? For shares and debentures. And this is also discussed. Good, Mahi. वाओ, दोनों सेंटेंसेस को अगर हम मिला के देखें, माही ने लिखा शेयर होल्डर्स गेट्स डिविडेंड, ध्रुव ने लिखा डिबेंचर्स गेट इंटरेस्ट, बाद में माही ने भी उसको पूरा किया. Debentures holders receive interest and shareholders gets receive dividend. Yes, you are right. You are absolutely right. The way we should mention is this only, no doubt. You are absolutely correct. Return means the shares. See,
Again, the question, how the question is asked, that's matter. If I say write difference between share and debenture, you will say, sir, in share the return is dividend, and in debentures the return is interest. Fine. But when I ask the difference between shareholder and debenture holder, then you should say, sir, shareholders gets interest. Is it correct? Wrong. Shareholders gets dividend and debenture holders gets interest. This should be the statement. So how the statement should be formed, that should be very clear. डिबेंचर्स को इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड नहीं. शेयर होल्डर्स को शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाइस. क्विकली हाथ चलते रहना चाहिए आपके, ताकि पता लगे कि आप बैठे हो. ध्यान इधर उधर भटकना ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. अगर आप सब जल्दी जल्दी बोल दे कि डन, तो हम आगे बढ़ सकते हैं. कमान कमान कमान. Sorry. Nice. Absolutely. Debentures holders get fixed return. Yes, that is also absolutely right. Fantastic. I'm impressed. Debenture holders gets fixed rate of return, fixed rate of interest, and shareholders, unlike debenture holders, may have fluctuations. लेकिन एक बात क्लियर जरूर करूंगा, जब ये बात आई है तो शेयर होल्डर्स भी दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. वहां यू हैव टू मेक इट क्लियर कि प्रेफरेंस शेयर्स को तो फिक्स्ड ही मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्लक्चुएटिंग मिलता है, यानी कि वहां फिक्स्ड नहीं होता. प्लीज बी केयरफुल. ठीक है, आप सही हो, बट मैंने इस बात को और एक्सपैंड करके आपको बता दिया. सही. कैन वी प्रोसीड फर्दर? Now comes the next point. When we are able to do the distinct difference between shares and debentures, one very important point is repayment. What do you want to say about repayment? How will you do the difference between shares and debentures on the basis of repayment? Come on. How will you do the distinction between share and debenture on the basis of repayment? Still waiting for you all. Very good, Dhruv. I can see your answer. Debentures are repaid on due date. What about shares? Come on.
Do not get during the lifetime of company. Oh, great. Again, Mahi, I'll ask which type of shares you are talking about. Because when we talk about preference shares that can either be redeemable or irredeemable, you must mention that equity shares are not repaid in lifetime. Please understand what I want to say. Yes. So this answer on your screen, come on, one more interesting word, Ria. You can't use the word dissolution. Dissolution of firm is there when the company, you know, comes to an end. That is called a winding up of company, liquidation of company, राइट. फर्म के लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज होता है जब उसे फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं, तो उसको वो यूज करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. लेकिन कंपनी के लिए टेक्निकल वर्ड यूज होता है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. प्लीज टेक केयर. जब आप बात लिखते हैं, करते हैं, तो डेफिनेटली उससे कुछ और बातें भी मैं एक्सप्रेस कर देता हूं ताकि आपको सही चीज का पता लग सके. होप इट इज क्लियर. Okay. Now, can you tell me one more thing? Are you all able to see me without any, fluctuations? Can you understand me when I am speaking? Right. Right. Mahi, Ria, Dhruv. Fine. Fine. Is it Tanya? Zinish? मेरी आंखें कमजोर हो गई है. Is it Tanya? Tanya, reply if you are there. Okay. Nice. Then now I'll talk about the next base, that is voting right. I always heard about the voting rights about shares, but I have never heard about this voting right of a debenture. So can you please do the distinction on the basis of voting rights? Come on. Am I right? जब तक कि डिवेंचर होल्डर टेक ओवर ना कर लें कंपनी को, तब तक उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता. कोई भी शेयर होल्डर कभी नहीं चाहेगा कि डिवेंचर होल्डर्स अंदर आकर वोटिंग राइट करें और कंपनी को अपने नियंत्रण में लें. यह हमेशा याद रखिएगा. डिवेंचर्स आर द
External creditors, they are the debt providers. We pay interest to them and we guarantee them your principal amount will be repaid after a certain period of time. मैंने 5 साल के लिए लिया है, 10 साल के लिए लिया है, 12 साल के लिए लिया है, मैं उसकी पेमेंट आपको कर दूंगा, इट्स फाइन. बट वो कभी नहीं चाहेंगे शेयर होल्डर्स के डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के अंदर आके कंपनी के लिए वोटिंग करें, कंपनी के असेट्स पे अपना हक जताएं. नो. कंपनी के प्रॉफिट पे अगर वो अपना हाथ लगाने लगेंगे तो शेयर होल्डर्स का पैसा कम हो जाएगा, डिविडेंड पे कंट्रोल उनके चला जाएगा, वो कभी नहीं चाहेंगे. यस, पहले आप अपना नाम बताओ तब बताऊंगा. प्रेफरेंस शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स और नॉट? मैं सबको पहचान रहा हूं. वेटिंग. ओके ओके बेटू. See, preference shares gets the voting rights if and only if article of association permits. Rashi. Right. जैनिश, आप कौन से स्कूल में हैं? You are right, Mahi. In some cases, they get the voting rights. You are right. When we are doing the distinction between shares and debentures, this is something very important to understand. Debenture holders don't get the voting rights, but the shareholders, especially equity shareholders, always have the voting rights. But the preference shareholder gets the voting rights if and only if the AOA permits. So this is very important. Now, the next very important point, issue at discount. Can you tell me, by using this point, how can we make the distinction? Issue at discount. Saint Mary, okay. Come on. Issue at discount. When we say, do you know shares can never be issued at discount? I repeat, shares can never be issued at discount. Never. But debentures can be issued at discount. डिस्काउंट से मेरा मतलब है फेस वैल्यू से आप उसकी कीमत कम नहीं कर सकते, ये आपको क्लियर होना चाहिए. जब हमने टर्म 1 में शेयर्स पढ़ा था तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर बताया था. फेस वैल्यू जो शेयर की लिखी हुई है, अगर वो 100 रुपीस का शेयर है तो आप उसे 100 रुपीस में देते हैं तो उसे एट पार कहते हैं. 100 रुपीस के शेयर को आप 90 में देते हैं तो उसे डिस्काउंट कहेंगे, लेकिन आप शेयर्स को कभी इशू एट डिस्काउंट कर ही नहीं सकते. हमने शेयर्स जब पढ़ा था तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स कभी नहीं पढ़ा. लेकिन डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो. राइट. अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन आज अच्छे से एक बात को समझ लीजिए. डिबेंचर्स फेस वैल्यू के बराबर पे भी इशू हो सकता है,
फेस वैल्यू से कम पर भी और फेस वैल्यू से ज्यादा पर भी। अगर 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही मैं दे दूं पब्लिक को, तो वो इश्यू एट पार कहलाएगा, जैसे शेयर में भी होता था। 100 रुपए का डिवेंचर अगर मैं 150 रुपए में दे दूं, तो इश्यू एट प्रीमियम कहलाएगा, जैसे शेयर में भी होता था। लेकिन 100 रुपए का डिवेंचर 93 रुपीज में दे दूं, तो द 7 रुपीज इज डिस्काउंट, दिस इज इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। ऐसा शेयर में कभी नहीं होता था। तो अगर मैं आपसे सिमिलैरिटी पूछ लूं, देखो डिफरेंसेस खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मेरे जैसा टीचर पेपर बना दे तो मैं एक पॉइंट बच्चे को चेक करने के लिए डिफरेंस नहीं सिमिलैरिटी भी पूछ लेता हूं। मैं कहता हूं कि प्लीज राइट 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। अब बच्चा कह सकता है सर शेयर्स एंड डिवेंचर्स बोथ कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम। मैं एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि पॉइंट बताया है। क्या दूसरा पॉइंट और कोई बता सकता है जो शेयर और डिवेंचर में सिमिलैरिटी है? कम ऑन, आप में से कौन इसका दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट मैंने आपको बताया सर, क्या आप दूसरा पॉइंट मुझे बता सकते हैं? एनीवन अमंग यू? जो लोग बाद में इसको देखेंगे दे कैन ऑल्सो कमेंट। एनी अदर पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर? हम लोगों को आदत हो जाती है डिफरेंसेस करने आते हैं सिर्फ, क्या हम सिमिलैरिटीज भी कर सकते हैं? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कोशिश। कमान। हाँ या ना लिखना है, तब मुझे समझ में आएगा कि यस शुड आई प्रोसीड। बोथ गेट रिटर्न, यस यू आर राइट, both get return, this is true. One in the form of interest, another one in the form of dividend, that is another matter. Yes, you are right, I agree to this point also. Both helps to increase funds, you are right, and by this point only I am saying both are indicated in the liability side of balance sheet. शेयर्स भी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में ही आता है और डिवेंचर्स भी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में ही आता है, एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इंक्रीजेस द फंड। यू आर राइट, आप लोगों को काम करना आता है, यही तो अच्छी चीज है, और काम करते करते हमें करना आ जाता है एक्चुअली, एंड धीरे धीरे वो स्मूथ होता चला जाता है। गुड, नाइस टू सी योर आंसर्स। चलते हैं एक और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप लोग बाद में भी इवन आकर इन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं, मेरे पॉइंट्स यहीं पर रहेंगे और इसीलिए द पर्पस इज डिफाइंड हियर। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी का आप क्या कहना चाहोगे। सिक्योरिटी कहां है, शेयर्स में है या डिवेंचर्स में है? क्या लगता है आपको? जनरली हर डिवेंचर्स पे नहीं मैं बोलूंगा ये बात, लेकिन यस जनरली डिवेंचर्स आर मोर सिक्योर्ड। यस यू आर राइट, डिवेंचर्स आर मोर सिक्योर्ड देन शेयर्स। शेयर्स अगर कंपनी के अंदर लॉस हो गया बहुत बड़ा, तो पहले असेट्स को बेच करके डिवेंचर्स की पेमेंट की जाएगी, उसके बाद कुछ बचेगा तो प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट की जाएगी, उसके बाद भी कुछ बचेगा तब इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। इसलिए वहां सिक्योरिटी बहुत कम हो जाती है, एंड डिवेंचर्स वर अर्लियर चार्ज अगेंस्ट असेट, है ना, चार्ज ओवर द असेट्स कहे जाते हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज डिवेंचर्स को सिक्योर्ड नहीं कहा जाता,
दैट इज द डेट इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटी की कोई बात नहीं की जाती। प्रेफरेंस शेयर्स आर सिक्योर्ड बट नॉट दैट मच। सबसे पहले आउटसाइडर्स की पेमेंट होगी। अगर सब कुछ देने के बाद कुछ बचेगा तो अब दो लोग रह गए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले प्रेफरेंशियल राइट है कि तुमसे पहले, उसका नाम प्रेफरेंस इसलिए है शेयर्स कि शेयर्स दो तरह के हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मिलेगा इक्विटी के ऊपर कि तुमसे पहले मुझे मिलेगा, लेकिन बाकियों से पहले मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि हम भी शेयर्स हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। हम भी शेयर्स हैं, बाकियों को नहीं मिलेगा। बाकी लोगों को देने के बाद जो बचेगा तब हमें वो राइट मिलेगा कि हाँ हम अपना हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आकर अपना हिस्सा ले जाएंगे। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। होप प्रिया, इज इट क्लियर? प्रिया, इज इट क्लियर? ओके, गुड थ्रो। मैंने आपसे सिक्योरिटी की बात की, ठीक है, और वो आपको समझ में आना चाहिए। एक पॉइंट मैंने लिख दिया है, दूसरा पॉइंट इससे आप बना सकते हैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। डिबेंचर्स आर मोर सिक्योर देन शेयर्स, सिंपल शब्दों में। और एक बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो है कन्वर्टिबिलिटी। आपको क्या लगता है इक्विटी शेयर्स क्या कन्वर्ट हो सकते हैं? कमान बताएं। इक्विटी शेयर्स कैन नेवर बी कन्वर्टेड। वो लोग रिस्क बेरर्स हैं, वो लोग रिस्क कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं। देयर अमाउंट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इन एनीथिंग, बट debentures if mentioned can be converted into equity share, into new debentures, into preference shares, etc., etc., but it should be mentioned. I mean to say that debentures should be convertible debentures, then only it's possible. Please understand what I am saying. Hope this concept is clear. And then comes the most important point. Most important point. What do you say? I'll say heading and subheading. Most important point, which we have already discussed. Please give answer. Heading and subheading. This can be a point of distinction between share and debenture, and that's why it's important. Please understand. Still waiting.
You need to reply. Then only I will understand whether you got it or not. Come on. Heading and subheading. Headings under which share capital is recorded and debentures are recorded. I'll tell you, share capital is recorded under shareholders fund and debentures are recorded under non-current liabilities. And when we talk about subhead, share capital itself is a subhead under which equity shares and preference shares are there, and debentures are there in long-term borrowings at the time of issue. Right? Is it understood by you all? Everyone, reply fast. Good evening. Not sure, dear. But yes, it will be approximately March end. Hope you all understood this. So please make note of all these things and please revise those previous entries which you have already done in shares. Bank account debit to share application account. Share application account debit to share capital account. Share allotment account debit to share capital account. Bank account debit to share allotment account. You know all the entries. For first call, for final call, you know all the entries. Here in debentures, we will change the name of share capital to X% debentures. That's it. We will write bank account debit to debenture application account. Debenture application account debit to X% debentures. Rather than share application, we are using debenture application. And rather than share capital, we are writing X% debentures. Why X%? Because the percentage may vary. If they have given you 8% debentures, then you have to write 8% debentures only. So this is the way you have to record the entries. I will show you in the next class how the entries will be recorded on the board like this. And you will understand. Don't worry. So I'll make the setup accordingly. This is my guarantee. If you are doing once, it will never vanish from your mind. 101% की गारंटी है, वो आपके दिमाग से कभी जा ही नहीं सकता. एंड सुन, आज जैसा कि मैंने ये दिखाया आपको, आप इसके अपने नोट्स बना लीजिए. What is meant by the term debenture? What are the distinctions between shares and debentures? What are the similarities between share and debenture? Then understand debenture interest can be paid at what interval?
whatever I have given you, please try to make notes accordingly. It will be useful and fruitful for you 100%. Right? So मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. सी यू ऑल. जय हिंद. मैं अभी टॉपिक चेंज करूंगा तो वो टॉपिक एंड नहीं होगा, एंड दैट आई डोंट वांट, बिकॉज एक बार टॉपिक शुरू हुआ तो उस टॉपिक को कंप्लीट करके ही उठना है, चाहे वो 1.25 घंटे हो जाए, 1.5 घंटे हो जाए, वॉट एवर इट इज. तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और टाइम आगे बढ़ाते हैं. राइट? सुरभि, आज कोई दिक्कत परेशानी हुई? ग्रेट ग्रेट. चलिए ठीक है. तो जय हिंद once again. We'll meet in the next class, right? On Friday. Friday, same time. See you all. Jai Hind.